दोस्तों वेलकम टू माय चैनल प्रधान क्रेजी रिसर्च। प्रधान क्रेजी रिसर्च में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड कोविड-19। तो इसके बारे में जानने के लिए हम बुलाते हैं डॉक्टर सुंदर जी हाबू को, जो कि वर्ल्ड वाइड का फेमस डॉक्टर है। बट दोस्तों आप मेरा जो भी वीडियो है आप देखते हैं, लाइक भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा जो भी वीडियो आ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा एंड फ्यूचर में यूटिलाइज करने को मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टूडियो में मिलते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत हॉट है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं आपको, कोविड-19 कॉमन फ्लू, कोल्ड बोल सकते हैं या फीवर। सो आइए उसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर सुंदर हाबू को हम वेलकम करते हैं हमारा स्टूडियो में। डॉक्टर आप जरा बताइए, कोविड-19 और फ्लू मीन्स जो भी कोल्ड हो या फीवर है, उसका क्या कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं? COVID-19 and we can call this flu as a viral flu. Both are viral infections. दोनों viral infection है. They are not bacterial infection. Bacterial बोले तो क्या है? It responds to antibiotics. Bacterial. Viral does not respond to usually antibiotics. Only if there is some complications is there it responds. Otherwise, a virus there is nothing like treatment. Okay, these are the one thing. This virus is the virus name is SARS-CoV-19, and this flu ka this one is respivirus. This one, okay, respivirus. So COVID, what happens? A moment a person has contracted COVID, for at least a week he may not have any symptoms. Slowly then he will feel feverish after 8 to 14 days. The incubation period of COVID vaccine 8 to 14 days रहता है. Then slowly person gets little fever goes on increasing. Then after that fatigue, सुस्त होता है बहुत. And slowly when the virus infects your throat and all, you get dry cough. And after that the complications starts after 14 days. Patients को fever आ जाता है, vomiting हो जाता है, and slowly उसका smell जाता है. Usually majority of the patients smell नहीं रहता है, और taste तो any infection it goes. So these are the basic symptoms in the beginning of COVID infection or COVID fever. And if you start with viral or flu, any symptom starts within 1 or 2 days. 1 or 2 days it starts. So it starts with a sneezing. कोविड में वैसा स्नीजिंग नहीं रहता है, नेसल स्टफीनेस, नेस जरा पानी आते रहता है, बट कोविड में ऐसा सिम्टम्स कुछ नहीं है. इट इज अ ड्राई कॉफ कोविड में. बट फ्लू में क्या होता है? इट इज ऑल वेट. ओके, एंड अदर थिंग्स लाइक हेडेक एंड ऑल आर कॉमन इन केस ऑफ कोविड, इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस. सो डॉक्टर हमारे दर्शकों का बहुत सारा सवाल है, अगर कोविड-19 है या फ्लू है, उसमें फीवर कितना दिन तक रहता है? Yes. Usually, flu cough fever does not remain for 3 to 4 days. So this is what is a normal viral flu. But COVID, what happens? Whenever a COVID comes, or it is infected with a COVID, usually the fever starts after 14 days, 8 to 14 days. Incubation period is that much. And after that, if you have not diagnosed it, fever slowly it remains almost for 20 days, 25 days like that, till it meets the डॉक्टर. सो डॉक्टर जैसे कि हमको पता है कि फ्लू एवरी एज स्टेज में हो जाता है, बच्चे को भी होता है या कोई यंगर एज में होता है, एंड सीवियरिटी नहीं होता है. बट कोविड-19 कौन सा एज में सीवियरिटी होता है? कोविड इज यूजुअली वी कॉल इट कोमॉर्बिड स्टेट्स. कोविड किसी को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है, लेडीज ऑल्सो कैन गेट इट और एनीबडी कैन गेट इट. बट मॉर्बिडिटी बोलते हैं, मीन्स व्हेन इट बिकम सीवियर कब है? पर्सन को कभी डायबिटीज रहता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हिज डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल्ड, तब द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. इन केस ऑफ ओल्ड एज, ए पर्सन हु इज अबाउट 70, उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बिकॉज हिज इम्यूनिटी लेवल. कोविड क्या होता है?
reduces your immunity level. Immunity बोलते हैं, resistance to infection is called immunity. So their immunity level बहुत कमी रहता है, so they are very prone for COVID infection. And a person with cardiac problem, heart problem, whether he has undergone angioplasty कुछ हो गया तो उसका basic immunity level is at a lower level. And a person with diabetes as it is, your immunity level is very low. So you are very prone for COVID infection in the first stage, and you may lead into complications like pneumonia or any other complication, because nowadays the COVID infection कौन सा भी organ को जा सकता है, either it is usually basically lungs को affect करता है. If it remains there, then again it will spread to the other organs like brain and all, and the patients may into coma. So, and the basic reason for this complications is lack of oxygen. It affects the lungs. Patient is not able to breathe. So oxygen level कमी हो जाता है. Then the patient lands in all the trouble. So डॉक्टर, हमारा दर्शकों का ये भी सवाल था कि सपोज कोविड-19 हुआ है या कॉमन कोल्ड फीवर हुआ है, इसको हम डायग्नोसिस कैसा कर सकते हैं? Yeah, nowadays there are so many methods to diagnose whether COVID or means important is COVID, because viral fever as it is वो आता है जाता है, there is no problem, then you not have to worry. COVID to diagnose, suppose a person comes with high fever more than 102, usually COVID fevers are more than 100, 203 ऐसा रहता है. Then the best thing is go to, nowadays every health center or every laboratory has a blood test, antigen test करते हैं, that is, and RT-PCR बोल के रहता है. These are the basic tests. So once your COVID is confirmed positive, and if the fever remains for more than 2 weeks, then we ask for further tests, because whether the lung is involved or not, whether the lungs में pneumonia हुआ है, because when once a person COVID का pneumonia हो गया, वो गया काम से. So you have to be very careful when dealing with COVID. So ask for a CT scan. How much is the involvement of the lungs? Whether it can be treated, because whenever lungs are involved with pneumonia and all, then we use best of the anti-COVID viral drugs, antiviral drugs. There are so many viral drugs have come now. So you have to start it as early as possible. So these are the things that helps in diagnosing COVID. Viral fever, you need not have to worry. Give some decongestants, you give some paracetamol. So these are the things which will cover up this viral fever or flu. डॉक्टर, हमारा दर्शकों का ये भी सवाल था, क्या कोविड-19 के लिए जो हम वैक्सीन लेते हैं ये हमको प्रोटेक्ट करता है? Yes, 100%. Because nowadays the incidence is, because people are vaccinated, 50% or 60% of the people vaccinate हुआ है. So then what happens? It gives you the herd immunity. So you are already vaccinated, and the influence or the severity of the COVID, you may get COVID infection after 2 doses of vaccine also, but nobody dies of COVID vaccine. So many important persons, talented people have died because of COVID infection, because of that comorbid conditions. So once you are vaccinated, you may get the COVID infection, but you will not die of COVID. Only thing is you will have some fever here and there, and you may have to isolate yourselves, and you will be okay. So this is the advantage of getting COVID vaccine, means for the full population in fact. जैसे कि हम देखें कि कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन है, क्या फ्लू के लिए ऐसा कुछ वैक्सीन मिलता है मार्केट में? Yes. Flu के लिए also there are, but only thing is flu has lot of variants in the flu virus. So there are flu vaccines are there, we give it, but it is not very effective because of the lot of other variants of the flu. Flu has 1, 2, 3 like that. So if you give vaccine for one, you may get flu of different type. But still for children we give that flu vaccine. डॉक्टर, जैसे कि हमको पता है कि सपोज ये हमको आज फ्लू हुआ है, कॉमन कोल्ड फीवर आज हुआ है, महीने के बाद भी होता है, क्या कोविड-19 सेम होता है कि एक बार हुआ तो फिर महीने के अंदर और बार आ सकता है? Yes. It can come. So whenever you have now, when the pandemic is going on, whenever you are having fever for 3 to 4 days, every time it is better to test for COVID, because it can recur again and again, because depending on your body immunity level. डॉक्टर, कोई भी कोविड पेशेंट रहते हैं या कोविड-19 पेशेंट रहते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, क्या वो नॉर्मल लोगों को दे सकते हैं उस बीमारी? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोले तो पेशेंट फीवर नहीं रहता है, he will attend his duties, he will attend to the gym, but the problem is he is the most dangerous person, because he can transmit COVID infections to the full community whenever he goes in the crowd.
you don't suspect. So till around 14 to 15 days he is asymptomatic. Literally he may have some fever and all, but thing is he is the most dangerous guy because he spreads COVID infections to the full population. So you have to have a watch on them. डॉक्टर जिसी को कोविड-19 और फ्लू, हमारे दर्शकों का ये सवाल था कि उसमें कॉमन चीज क्या होता है? Common is fever. Common in COVID and viral flu. 2-3 things are very common. Patient has fever. Only thing is duration of fever is different. Second thing is you have loss of appetite. Whenever there is an infection in the body, बॉडी में इन्फेक्शन रहता है तब तुम्हारा टेस्ट नहीं रहता है. दिस इज कॉमन. ओके, ये तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन कोविड और फ्लू में. डॉक्टर कोविड-19 और फ्लू में रनिंग नोज या सूखा खांसी जो होता है वो तो जनरली हम देखते हैं कि कॉमन रहता है. क्या ट्रीटमेंट उसके लिए सेम है या ट्रीटमेंट डिफरेंट रहता है? को वायरल फ्लू के लिए देयर इज नथिंग ऐसा ट्रीटमेंट पैसा जैसा नहीं है. फीवर है तो पैरासीटामोल दे देते हैं और रनिंग नोज है तो सम कॉफ सिरप और सम डिकंजेस्टेंट्स. सो विद दैट फ्लू विल रिकवर एंड सम मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सम विटामिन्स लाइक जिंक एंड विटामिन सी. These are the best things in case of viral fever. Even in COVID infections, we give this zinc and vitamin C, means higher dose of vitamin C. So that is also there. क्या डॉक्टर हमारे जो हम नॉर्मल फूड खाते हैं, फूड के थ्रू कोविड-19 या फ्लू हम खिला सकते हैं? Yes. सपोज हम होटल में गए हैं, कुछ फूड के जरिए से हमको कोविड-19 या फ्लू हो सकता है? No, it is not reported that report तो नहीं हुआ है that COVID is transmitted by food. So I think there is no point restricting your diet or anything. अगर किसी को कोविड-19 या फ्लू हुआ है तो जैसे कि ठंडी का चीज खाने का मीन्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या कुछ जो बेवरेज चीज रहता है जो हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं वो चीज खा सकते हैं? In case of COVID or viral flu, it is usually not advised. It is better to eat or drink something very hot, everything hot, or everything fresh. Vegetables should be fresh, and food should be very hot, and totally avoid anything ice cream or anything from the deep fridge. You better avoid. डॉक्टर जिसको कोविड-19 हुआ है वो क्या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए क्या कर सकता है? वो तो आउटसाइड जा नहीं सकता है, सो कैसा उसको मेंटेन करना है? फर्स्ट थिंग इन कोविड इन्फेक्शन में कुछ तो आइसोलेशन तो होता है, क्वारंटाइन बोलते हैं उसको. सो सम बेसिक एरोबिक एक्सरसाइजेस एट होम, एट हिज रूम, इन हिज रूम, और सम योगा, एंड मोर इम्पोर्टेंट इज सम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस. वो योगा में कुछ कपालभाति एंड ऑल दैट थिंग्स विच गिव्स यू ऑक्सीजन. दैट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज actually it is meant for COVID infections because you can do it sitting at home and it is very very helpful. It gives lot of oxygen. Yeah. तो डॉक्टर हमारा एक दर्शकों का कॉमन सवाल था, कोविड-19 में भी हमारा जो वास लेते हैं उसी का पता नहीं चलता है कि क्या है. इवन कॉमन फ्लू में भी सेम रहता है. नहीं, उसके लिए क्या आप कॉमन फ्लू में स्मेल रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ नोज भरा हुआ रहता है, पानी मीन्स दैट म्यूकस. सो इट इज देयर ओनली फॉर 2 to 3 days एंड देन बाद में ठीक हो जाता है. बट कोविड में क्या होता है, इट अफेक्ट्स योर नेसल नर्व्स, स्मेलिंग सेंटर्स रहता है ना इन द ब्रेन एंड दिस वन. सो इट अफेक्ट्स दैट. इसीलिए sometimes that COVID infection से loss of smell, it remains permanent रह जाता है कभी कभी because it is a central involvement of the COVID. This is the reason. And because of the taste also what happens, some people may smell of kerosene. Even if you take thumbs up or something, it tastes like kerosene. So this is because the COVID has involved your this one, what is that, taste centers and your nerve centers. Yeah. सो डॉक्टर अगर हमारा दर्शक को किसी को कोविड हुआ है या फ्लू हुआ है, ये कितने दिन में रिकवरी हो सकते हैं, कितना दिन से बाहर आ सकते हैं? COVID, if it is a minor infection, around before it used to be around, before vaccination it used to be around 20 days. Nowadays we tell the patients if they have vaccinated then they can go to work after a week. But before, because this COVID infection used to lead into pneumonia, it was leading into some kidney failures or some heart failures, because COVID can infect any organ of the body. So then it is a complication and then patient remains. I may have to go in a ventilator. Otherwise, nowadays, COVID infection, 1 week rest is more than enough. And before that, and before going to the work, let him test his
blood again, and if it is negative, he can join his duties. डॉक्टर व्हाट अबाउट फ्लू में? फ्लू में ऐसा कुछ नहीं है, एक पेशेंट पर्सन हैज टू रिमेन एट होम फॉर 1 or 2 days. Best of the food, nutritious food, relaxed mood, and activities, that he will recover within 2 to 3 days. He does not need any treatment also. अगर हमारे दर्शकों का ये सवाल था, किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर उसको कोविड-19 होता है तो सीवियरिटी क्या हो सकता है? That depends on how much is your diabetes under control, how much is your cardiac condition is under control. Because lakhs of people have died, and most of the majority of the people कोई मर गए, they had 3 things were common. They were elderly people. Second thing is they had uncontrolled diabetes, and they had some cardiac problem. And more than anything, the most people who have died is who are on dialysis, kidney failure. So these are the comorbid conditions. Comorbid बोलते हैं उसको. Comorbid बोले तो they have associated long-standing infections or infectious debilities. So these are the people who are very prone for COVID complications and death. सो दर्शकों, आपका जो भी सवाल था मैं डॉक्टर सुंदर हब्बू के माध्यम से आपको दे चुका हूं। अगर उससे हटके आपको और कुछ क्वेश्चन आंसर जानना है तो प्लीज मेरा कमेंट बॉक्स में आइए, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और मैं वो क्वेश्चन को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपको उसी आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। सो मैं डॉक्टर को धन्यवाद देता हूं आप हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। थैंक यू डॉक्टर।